Good morning, dear student. This is class 12 and I am Anjali. Today we are going to start a new topic, that is force on a charge moving in a magnetic field. Means suppose I kept a charge, either it is a positive charge or negative charge. Suppose I kept a charge in the magnetic field. You know, as you read in class 10th, a charge experience electric field, magnetic field and experience a force also. That force is always perpendicular to the magnetic field and the electric field. ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि अगर किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं फील्ड में रखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, डेफिनेटली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या फ्लो हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या उसको एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल को, फोर्स। ठीक है, why? Because here three axes is there, x axis, y axis and z axis. Suppose the charge particle experiencing electric field in x axis, so it experience a magnetic field y axis and experience a force in the z axis. ये हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 10th में. So ऐसा ही exact same topic है in class 12th also. Force on a charge moving in a magnetic field. How much force experienced by a charge when it is kept in a magnetic field? So here I kept a charge. This is the diagram. Here I kept a charge Q, which is in the magnetic field, and the strength of magnetic field will be B. Strength of magnetic field will be B. Now the magnetic field is acting along z-axis. Magnetic field is acting along z-axis, and the charge particle is moving. See, here the charge particle is moving between the y-axis and x-axis. The charge particle is moving in between the y-axis and x-axis. And now after moving, the charge particle experiences a force. The charge particle experiences a force that is F. That is F. Okay, along the x-axis. Okay, the charge particle is moving in the magnetic field, and the magnetic field is acting along z-axis. Clear, student? And now the charge particle is moving between the x-axis and y-axis, and after moving, the charge particle also experiences a force. That is F, and it is along the x-axis. Clear, student? This is along the x-axis. This is your whole theory. जो मैंने अभी बोला है, this is your theory. Please listen it. ठीक है? After pausing it, pause कर करके इसको सुन लेना एक बारी और इसी को theory बना के तुम अपनी कॉपी में लिखोगे. Okay? So now my derivation got started. Whatsoever force experienced by the particle, this force experienced by the charge Q is directly proportional to magnetic field. ठीक है? Again, force experienced by the charge Q is directly proportional to how much charge is there. ठीक है? कितना चार्ज है? यही चीज सेम यहाँ पर है. Force experienced by the charge Q is directly proportional. It's so long. You can see it from the book also. ठीक है? It's directly proportional to magnetic field, and it's directly proportional to how much the capacity of charge, and directly proportional to B sin theta. इसको लिखने के लिए मैं एक टर्म बताती हूँ. तुम लिखोगे force is directly proportional to the component of velocity. Force is directly proportional to the component of velocity along the direction. ऐसे लिखो, force is, I'm going to write it. Force is directly proportional. बहुत important है, लिखना जरूरी है. Force is directly proportional to the component of velocity along the direction
along a perpendicular direction, yeah, component of velocity along a perpendicular direction of magnetic field. ठीक है, मतलब कि कितना फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली वो किसके परपेंडिकुलर एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्ट होगा. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? कैन आई राइट इट फ्रॉम हियर? Adding all the equation, क्या हो जाएगी वैल्यू? F is calculated B Q B sin theta. After adding all the equations, you will get the B Q B sin theta. Now I am going to write it in the form of vector. Okay, no. First I have to remove the sign of proportionality. For removing the proportionality sign, I have to write the value k. यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट की है, the value k. Here the value of constant will be 1. So F is equals to BQB sin theta. Clear student? F is equals to BQB sin theta. Now in the form of vector, F is equals to Q. Yeah. This is in the form of vector. This is in the form of vector. Okay. So your final answer is this. F is equals to BQB sin theta. In the form of vector, you are going to write F is equals to Q. It is a sin theta. That is why here we are using cross product. Clear student? And now the most important point. This force is known as magnetic. This force is known as magnetic Lorentz force. ये जो फोर्स एक्ट हुआ, बाद में इसको किसने समझाया? लॉरेंस साइंटिस्ट ने. So that is why it is known as magnetic Lorentz force. It's known as magnetic Lorentz force. So in the exam it may come like derive magnetic Lorentz force or whatsoever force act in a magnetic field, that we have to derive. तो question दो फॉर्म में आ सकते हैं. Clear student? So this is the derivation. Now can you log this please? Note it down. Now after doing this, there are so many conditions. There are three conditions when the magnetic Lorentz force will be maximum. The point is when the magnetic Lorentz force will be maximum. So for that, maximum, minimum. So for the first case, when the charge is at rest. First case क्या है student? When the charge is at rest. Charge is at rest means if the charge is at rest, so F is equals to BQB sin theta. Charge ही rest में है, मतलब कि which value is going to be 0? V is going to be 0. Means the force will be 0. इस केस में minimum force होगा कब? When the charge is at rest. Second condition, when charge is moving parallel to the field. When the charge is moving parallel to the field. Field means magnetic field. Okay, when it is moving parallel to the field. Parallel to the field means sin theta की कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट? Yes, sin theta की वैल्यू आ जाएगी either it will be a 0, या तो वो पैरेलल होगा या तो वो एंटी पैरेलल होगा. ठीक है, तो या तो वो 0 डिग्री पे ट्रैवल करेगा या तो वो 180 डिग्री पे ट्रैवल करेगा. पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में फिर से लिखते हैं BQB sin theta. When you will put the value of theta 0 or 180 degree, theta की जगह बेटा you will put 0 or 180 degree. In both the cases sin 0 or 180 will be 0. मतलब again force will be 0. मतलब force minimum कब act हो रहा है? When the charge is at rest or when the charge is moving parallel to the field. Third case,
perpendicular. Directly I am going to write it. Perpendicular to the field. Perpendicular to the field. When the charge is moving perpendicular to the field. तो कितना हो जाएगा? Yes. In that case, theta will be 90 degree. F is equals to BQB sin theta. अभी थीटा की जगह क्या लिख दोगे? 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स मैक्सिमम 1. कितना आ जाएगा? F is equals to BQV. मतलब when the charge particle is moving maximum, when the force is acting maximum, when the charge particle is moving in the direction of 90 degree. When it is going to be minimum in case of 0 or in case of 180. Clear, student? I think that three cases is clear. That will be the cases. ठीक है? Cases. Cases. ये क्या है तुम्हारा? Cases. Now, can I take one numerical? Numerical, okay. For the numerical, I am going to explain you. Here I am going to write the numericals because I don't have space. So for the numericals, yeah, I have to take the question. Yeah. What is the question? Question is, in a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss. ध्यान से सुनो. Here the मैंने बताया. Here the unit of magnetic field will be Tesla. ऐसा unit of magnetic field will be Tesla. And the relation of Tesla to Gauss. Gauss भी है, वेबर भी है, टेस्ला भी है. ठीक है? बट ऐसा यूनिट इज टेस्ला. ओके, यहाँ पर देखिए कितना बोल रहा है? 6.5 गॉस. बी कितना है यहाँ पर? 6.5 गॉस. हमको किसमें कन्वर्ट करना है? टेस्ला में. तो कितना हो जाएगा? 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 टेस्ला. एक गॉस में कितना टेस्ला होता है? 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ठीक है? Okay, is maintained. An electron is shoot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6. With a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second. It is, yeah, it is meter per second. चार्ज पार्टिकल लिया, उसमें फील्ड इतना फ्लो हो रहा है. ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन शूट किया. मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड बी थ्रोन नॉर्मल टू द फील्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, नॉर्मल टू द फील्ड. एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल. अब मुझे समझाना है आखिर ये सर्कल क्यों घूमेगा. सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल थ्रो किया है. ठीक है, फील्ड है वहाँ पर, मैंने उसमें चार्ज पार्टिकल डाला है. अब देखना है कि चार्ज पार्टिकल आखिर सर्कुलर ही क्यों मूव करेगा. क्यों मूव करेगा? कभी भी जब कोई पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम परपेंडिकुलर उसमें फ्लो करते हैं तो हमेशा, याद है डेथ पूल वाला केस 9th क्लास में पढ़ाया था, हमेशा वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी भी पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलरली कहीं डालोगे तो डेफिनेटली इट मेंटेन्स अ सर्कुलर पाथ. जैसे स्टोन भी मूव करते हैं तो परपेंडिकुलर हम उसको मूव करना शुरू करते हैं और वो कैसा पाथ मेंटेन करता है? इट मेंटेन्स अ सर्कुलर पाथ. एंड दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, यस. हाँ, फाइंड क्या करना है आपको? रेडियस फाइंड करना है. रेडियस फाइंड करना है. ओके, मैंने पहले ही आंसर बता दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, क्योंकि जैसा ही ये इट्स अ रूल कि अगर पार्टिकल को तुम परपेंडिकुलरली किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर थ्रो करोगे फील्ड के अंदर सो डेफिनेटली इट मेंटेन्स अ सर्कुलर पाथ. एंड व्हाई इट मेंटेन्स? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है 11th में mv²/r. 11th में पढ़ा है v²/r. ये कितना हो जाएगा? लॉरेंट्ज फोर्स BQV. BQV क्यों? क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा. अब हमको क्या फाइंड करना है? b से b कैंसिल हो जाएगा. mv = bq और ये क्या हो जाएगा? r. r निकालना है mv/bq. You have the value of v. You have the value of yes b. b और b की वैल्यू हमारे पास है. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. हियर दे टॉक अबाउट द यस mass of electron. You know the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31. Okay. Now, and the value of q, you know the charge on electron.
That will be 1.6 into 10 to the power minus 19. Please put the value of m, b, q, and at last you will get the value of r. Numericals solve. And reason is what? It follows the centripetal force. Because of that, it maintains the circular path. Okay, today we completed how much force is acting on a charge when it is moving in a magnetic field, and that force is known as magnetic Lorentz force. Okay, 3 cases are there as well as we did one numerical. Okay, tomorrow we are going to start a new topic. Please revise it. It is very important as well as very easy. F is equals to BQB sine theta. Okay, thank you.